Good morning students. Class 12 subject physics and unit 3rd. यूनिट 3rd का बेटे हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फोर्स ऑन अ चार्ज। मैंने अभी आपको प्रीवियस क्लासेस में कुछ उससे रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करे थे बेटी। आज जो हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हम मोशन से डिस्कस कर रहे हैं। किसके अंदर बेटे? मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। कोई भी यानी कि मोशन जब कर रहा है चार्ज पार्टिकल बेटे किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा होता है तो उसका पाथ कैसा होता है बेटे? सर्कुलर पाथ। तो मैंने बोला कोई भी मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, सही कोई चार्ज तो इस फॉर्म में कर रहा है, दैट इज अ सर्कुलर पाथ। तो वो मूव कर रहा है इस टाइप से। जब मूव कर रहा है तो आप बताइएगा तो लॉरेंट फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसा होगी? उसके v के परपेंडिकुलर होगी। तो v के परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑलरेडी फोर्स का अप्लाई कर रहा होगा उसके सेंटर की ओर। कहां कर रहा होगा बेटे? तो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके सेंटर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? उसके परपेंडिकुलर है। v वेलोसिटी से कोई भी चार्ज क्या कर रहा है बेटे? मूव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉरेंट फोर्स, तो दैट इज अप्लाइड ऑफ फोर्स इज F is equal to QBB. F is equal to QBB. वैसे तो QBB sin थीटा होता है, लेकिन that is a perpendicular condition. It is a QBB sin 90 and sin 90 is 1. So that is a F is equal to QBB. Apply this force, but according to the force applied in a circular path. So what is the condition of circular path? Using the other forces is a centripetal force. Centripetal force. What is the centripetal force? That is the centripetal force is mv square upon r. So using the two forces applied on this condition, Lorentz force and centripetal force is always equal. Okay बेटे, next topic, motion of a charge particle inside a uniform magnetic field. तो मैंने बेटे एक ऑलरेडी चार्ज लिया पॉइंट ए पर, मूव कर रहा है कोई भी चार्ज q a पॉइंट से, v वेलोसिटी से फोर्स अप्लाइड का होगा बेटे towards the center, and that is a second point, that is a b, and other point c and dot 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 and finally to d point, e points. Magnetic field that is a perpendicular to v, perpendicular to b. तो फर्स्ट केसेस दे रहे हैं when v vector is perpendicular to b, when a charge particle having charge q moves inside a magnetic field with velocity v, it experiences a forces according to the Lorentz force. What is the Lorentz force? F is equal to QBB. Otherwise, F is equal to QB cross B. If M is the mass of the charged particle and R the radius of the circular path followed by it, so then using the force F is equal to QBB, Lorentz force, and other force is mv square upon r. Okay बेटे, तो QBB is equal to mv square upon r. mv square upon r. v is cancel, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होना है r QB is equal to mv, otherwise r is equal to mv upon QB. mv upon QB, that is a r is equal to mv upon QB. तो हम ही बात करेंगे पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन. द पीरियड ऑफ circular motion, period of circular motion of the charge particle, of the charge particle. So what is the definition of period? That is denoted by capital T. What is the time period is? The time is equal to distance upon velocity, and distance is already circumference. So that is a 2 pi r is a circumference upon velocity is v. Putting the value of r, t is equal to 2 pi upon v as a, and putting the value of r is mv upon qb. b is cancelled, that is a t is equal to 2 pi m upon qb. That is the time period of the charge particle inside a uniform magnetic field. In other words, the angular frequency
Okay, but angular frequency, what is the angular frequency? It is denoted by omega. So what is the omega is equal to 2 pi upon t. 2 pi upon t. Putting the value of time period 2 pi upon t is 2 pi m upon qb. 2 pi m upon qb means 2 pi a cancel, and omega is equal to qb upon m. qb upon m, that is the angular frequency of the charged particle inside the uniform magnetic field. Is that clear? Okay, but next part is when V and V are inclined to each other. So V and V are inclined to each other. That is a form of helical path. So helical path, that is as a spring form, is also form of helical path. The distance traveled by the charged particle along the direction of magnetic field in a time it completes one revolution is called pitch of the helical path. That is a form of spring. That is a one revolution at a time is called a pitch. That is a form this. Is called also pitch of the helical path. Pitch of the helical path is Vv multiplied T. Vv is, that is a part V condition, is a component, horizontal component of velocity, and T is the time period. Horizontal component velocity is V cos theta and time period is 2 pi m upon Vq. So pitch of the helical path is 2 pi m V cos theta upon Vq. Is that clear?